सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है तारिफ अंसारी और आप देख रहे हैं तारिफटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11.1.4.4 के अपडेट के बाद आखिर पबजी जो है इसमें कैसे चलता है। दोस्तों, इस अपडेट को आए हुए 2 सप्ताह से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का रिव्यू नहीं दिया था और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई इस पे जो है आप रिव्यू दो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं वही करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, हमने जो यहाँ पे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को ओपन कर दिया है और अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि आखिर इसमें जो है कितना परसेंट बैटरी है और अभी जो टाइमिंग क्या हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे टाइमिंग देख रहे हैं 3:15 हो रहा है। हमारे मोबाइल का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री है और हमारा जो बैटरी बैकअप मतलब परसेंटेज है वो 93% है। इसमें दोस्तों मैं टीडीएम मैच, क्लासिक मैच, सब मैच खेलूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर इस अपडेट में पबजी जो है सुधरा है या फिर नहीं सुधरा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यहाँ पे जो है इस वाले फ़ोन में OnePlus नोड में अगर 90 एफपीएस यूज़ नहीं किया है, तो मैंने चैनल पे एक जो यहाँ पे वीडियो बनाया है जिसमें दोस्तों आप लोग को बताया है कि आप जो है अपने फ़ोन में 90 एफपीएस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टीडीएम मैच करूँगा और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 92% है और 3:15 या 16 हो रहा है और हमारा जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे खेलूंगा गेम और आपको उसके बाद बताऊंगा कि आखिर इस अपडेट के बाद आपके फोन में पबजी कैसे चलता है, ये लैग होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से आपको ये पूरा टीडीएम मैच दिखाता हूँ, उसके बाद क्लासिक मैच भी आप लोग को दिखाऊंगा। Spree for the red team. The red team is in the lead. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. तो फाइनली हमने इस यहाँ पे टीडीएम मैच को यहाँ पे खेल लिया है और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि
इस वाले टीडीएम के बाद यहाँ पे आपका बैटरी परसेंट और टेम्परेचर यहाँ पे कितना यहाँ पे गया है, मतलब कितना आपका बैटरी जो है कंज्यूम करता है, कितना आपका टेम्परेचर जो है हाई होता है। तो पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे 92% था, अभी हमारे यहाँ पे 3% घट गया है। यहाँ पे दोस्तों जो डिग्री है मतलब टेम्परेचर है वो 42 हो गया है, जबकि मैंने गेम को 8 मिनट तक यहाँ पे खेला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बैटरी बैकअप अब यहाँ पे कैसा दे रहा है। चलिए मैं यहाँ पे टीडीएम लाइट को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लासिक लगाता हूँ और उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि आखिर अब जो है क्लासिक इसमें कैसे चलता है, लैगिंग प्रॉब्लम है या फिर फैन ड्रॉप प्रॉब्लम है या फिर आप लोग का बैटरी यहाँ पे जल्दी खाता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 89% है, 42 डिग्री हमारा जो है यहाँ पे टेम्परेचर है और 3:23 हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। This is a sim. Help! Excellent work. I got supplies. Excellent work. Help!
I got supplies. Excellent work. Help! I'm being surrounded. Excellent work. Awesome. Get in the car. Get in the car. Let's go. Marked a location. Watch out! Excellent work! Okay. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Marked a vehicle. Excellent work. Watch out!
सो दोस्तों यहाँ पे एक बंदा और बचा था जिसको यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर हो गया है। तो दोस्तों मैं अब आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों अगर अभी भी आप जो है एंड्रॉइड पबजी खेलने के लिए, तो अब आप जो है एंड्रॉइड 11 पे इसको जो है स्विच कर सकते हैं। दोस्तों 11.1.4.4 के अपडेट में आप लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप लोग को ना ही जो है यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप मिलता है, ना ही ज़्यादा यहाँ पे लैगिंग मिलता है, और ये जो है अपडेट बहुत ही अच्छा है। बैटरी के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा हम लोग का बैटरी बैकअप अब यहाँ पे दे रहा है। और वहीं पे दोस्तों टेम्परेचर का बात करें तो गेम खेलने में टेम्परेचर तो हल्का हाई जाता ही है। मैंने लगभग दोस्तों यहाँ पे 1 घंटा तक यहाँ पे गेम खेला, और जो हमारा परसेंटेज है वो यहाँ पे 23% के मुताबिक यहाँ पे हमारा जो बैटरी खत्म हुआ है, और वहीं पे 4% हमारा जो है डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हाई हुआ है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा।